Hitwa drinking, Mada Aghurnita Lochano, their eyes rolling with intoxication. Sri Janai with women, Anu Gayadvi, vibrating songs sung by them, wandered in a nice garden. Shukadev Goswami said, O King Parikshit, because the two sons of Kuvera had been elevated to the association of Lord Shiva, of which they were very much proud, they were allowed to wander in a garden attached to Kailash Hill on the bank of Mandakini River. Taking advantage of this, they used to drink a kind of liquor called Varuni, accompanied by women singing after them. They would wander in that garden of flowers, their eyes always rolling in intoxication. So it seems like ये भागवतम में भी ये सब क्या चल रहा है fully sense gratification यहाँ पे इनका full fledged चल रहा है इनका. Okay, we'll read the pocket. Yeah, so this verse mentions some of the material advantages afforded to persons associated with or devoted to Lord Shiva. तो ये कुबेर जो है, he is a very great devotee of Lord Shiva. So he has got this facility that he उनके बेटे को भी यहाँ पे वो फैसिलिटी मिल रही है कैलाश में ये they were wandering doing all these things. Apart from Lord Shiva, if one is a devotee of any other demigod, one receives some material advantages. Foolish people therefore become devotees of demigods. This has been pointed out and criticized by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Kamaistaistaihitajnana anya devata. So kama is out of sense gratification, out of having so many desires. Hitagyana means chinta, because of that so many desires, for sense gratification. उनका ज्ञान जो है वो कवर हो जाता है. Their knowledge, I mean, basically they are bewildered, they are ignorant. So what do? Prapadyante anya devata. They go to different demigods, Devi Devta, for fulfilling their desires. This has been already pointed out by Lord Krishna. So those who are not devotees of Krishna have a taste for women, wine, and so forth, and therefore they have been described as hitagyana, bereft of sense. The Krishna consciousness movement can very easily point out such foolish persons, or they have been indicated in Bhagavad Gita, where Lord Krishna says, ना तो क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कौन कैसे लोग होते हैं जो कि ये foolish Krishna consciousness को नहीं अपनाते. So there are types are given here. Namam dushkritino mudha prapadyante naradhanaha maya pritah jnana asurim bhavam ashrita. Those miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. Anyone who is not a devotee of Krishna and does not surrender to Krishna must be considered Naradham, the lowest of men, and Dushkriti, one who always commits sinful activity. Thus, there is no difficulty in finding out who is a third class or fourth class man, for one's position can be understood simply by this crucial test. Is he or is he not a devotee of Krishna? So this is a basic test given, whether he has propensity, inclination towards surrendering, accepting Krishna. If not, then maybe from a superficial point of view, he may look like very nice, very sober, very philanthropic, very nice person. But if he does not
have the tendency, he doesn't surrender to Krishna, then we can consider him as Narad, Dushkriti, third class, fourth class man. So, yeah. हम्म, यहाँ पे एक चीज और आ जाता है ये जो है उनके बहुत सारे डिजायर्स होते हैं दे अन्य देवता के पास जाते हैं दे डू नॉट टेक भक्ति बट रादर दिस सिंस दे आर फुली मोटिवेटेड फॉर मटेरियल थिंग्स दे डू नॉट एक स्टोरी है इसमें स्टोरी ऑफ आप लोगों ने पता नहीं शायद सुना होगा एक क्रेन और हंस का स्टोरी है इधर वहाँ पे बहुत सारे एक पॉन्ड था वहाँ पे बहुत सारे क्रेन्स रहते थे बगुला जो बोलते हैं तो वो लोग क्रेन्स आई थिंक स्नेल्स खाते राइट क्रेन्स और हेरन दो टू डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो वो स्नेल्स वगैरह खाते हैं तो वो लोग क्या हुआ कि वो वहाँ पे कुछ हंस आए एक हंस आया तो वो लोग देख के कह रहे ये कौन है वो पूछ रहे तुम कौन हो अलग दिख रहे थे हम इसके तो वो फिर सरप्राइज हो गए ये कौन है उससे पूछा कि कौन है तुम बहुत ही सुंदर वाइट जैसा था तो बोला कि मैं ऐसा हूँ हमसे हूँ जो भी हूँ मैं यहाँ मानस सरोवर से आया हूँ कैलाश में एंड वो क्या जगह है वो वहाँ क्या है वहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन है बहुत सुंदर पॉन्ड है बहुत सारे बहुत सारा कुछ डिस्क्राइब करता है कि कितना सुंदर है सब कुछ फूल है ऐसा है वैसा है बहुत कुछ खाने को बहुत अच्छा अच्छा चीज मिलता है बहुत सब कुछ डिस्क्राइब करता है तो वो पूछता है क्रेन जो है पूछता है इज देयर स्नेल्स वहां पे स्नेल्स है तो बोलता है नो तो बोलता है तो फिर क्या मतलब स्नेल्स नहीं है तो फिर क्या जाना है फिर क्या है तो वैसे ही यहाँ पे एक्चुअली जो काम स्थित ज्ञान है उनका वही है देयर कंसेप्शन ऑफ भक्ति लाइक दैट मतलब भक्ति में बिकॉज हम अभी जैसे डिवोटी है वो चैंटिंग करते हैं जो भी है वो जो रस मिल रहा है भगवान में एंड इट फॉर देम इट सीम्स लाइक कि बस टाइम वेस्ट हो रहा है क्या ही कर रहे हैं मतलब कॉन्सेप्ट भक्ति मतलब कुछ तो अभी जैसे वो अगर हम कुछ भूखों को खिला रहे हैं हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे हैं चैरिटी करने की बात कर रहे हैं इस तरह से तब दे विल रिलेट टू इट and or if there is some material benefits they are getting then they will be able to relate to it otherwise for them it's like they cannot relate to it similarly तो ये वो स्नेल्स वाला स्टोरी मतलब उसको क्योंकि वो स्नेल से ही अटैच है स्नेल से ही पसंद है उसको तो ही डजंट हैव एनी कंसेप्शन बियॉन्ड उसके भी कुछ हो सकता है या उससे बियॉन्ड भी कुछ अच्छा है तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे आ रहा है काम is this hutag ज्ञान your no senses or knowledge is covered basically and that's why you do not accept full-fledged bhakti which is जो happiness जो bliss promise हो रहा है वहाँ पे that is much more beyond that what you are getting in sense gratification. Okay, so yeah, so this is the crucial test. Is he or is he not a devotee of Krishna? Why are devotees of the demigods greater in number than the Vaishnavas? The answer is given here. Most of the people are generally looking for sense gratification. That's why we do not find much Vaishnavas. वैष्णव वर्ड भी लोग जानते हो तो ये भी वो भी सरप्राइजिंग हो जाता है The answer is given in here. Vaishnavas are not interested in such fourth class pleasures or as wine and women, nor does Krishna allow them such facility. So, yeah. तो यहाँ पे ये नलकुवर और मणिग्रीव का आ रहा है कि they were doing all these activities this activity okay we'll move on. Any comments here
Question, comments. Okay. Antah Parvishya Gangaya Ambhoj Vanarajini Chikridatur Pidhe Gajau Iva Karenubhihe Antah within Pravishya entering Gangaya, the Ganges known as Mandakini, Ambhoja of lotus flowers, Vanarajini, then there was a congested forest. Chikritatu, the two of them used to enjoy Yuvatibhi in the company of young girls. Gajau, two elephants. He was just like Karenubhi with female. Within the waters of Mandakini Ganges, which were crowded with garden of lotus flowers, the two sons of Kuvera would enjoy young girls, just like two male elephants enjoying in the water with female elephants. People generally go to the Ganges to be purified of the effects of sinful life. But here is an example of how foolish persons enter the Ganges to become involved in sinful life. It is not that everyone becomes purified by entering the Ganges. Everything spiritual and material depends on one's mental condition. तो या ये भी एक है कि यहाँ पे गैंजीज की गंगा नदी के बारे में आ रहा है कि वहाँ पे कोई भी अगर जा रहा है तो it is not that Prabhupada is writing. It is not that everyone becomes purified by entering the Ganges. So similarly, how much benefit we can get out of to be devotional service and karma, it also depends on one's mental condition. Like, for example, Mahaprasad ही है, might be available to many persons, and but it depends on one's mental condition, how they are accepting it, and depending on that, they get benefit, they get mercy. So, like अभी जैसे प्रभुपाद के बुक्स या प्रभुपाद teachings ही है, it's available, but depending on how you take it, how seriously you take it, you get benefit. And that comes to the thing, ये यथामा प्रपद्यन्ते तं तथैव भजामि. जिस तरह से आप सीरियसली आप उस चीज को लोगे, endeavor करोगे लेने के लिए, आपकी mental condition उस पर डिपेंड करता है. But then yeah, there is a term called agyata swikriti. Even though you are aware or not aware, you and you do some devotional activity by in ignorance also, still you get some benefit. But then if you do in knowledge, then they get more benefit. Do in knowledge and it's sincere devotion, then you get more benefit. That is also there. Example भी याद आ रहा था. Anyway, ठीक है. Any question, comments? हाँ, एक याद आया मुझे वहाँ पे ये रामानुजाचार्य का उसमें वो उनका क्या बोलते हैं उच्छिष्ट जूठा जो है वो जो भी उन्होंने खाया था उसके बाद वो अपना धो रहे थे कुल्ला जो किया था उसका जो थोड़ा सा ट्रेसेस जो है ना वो उनका जो जूठा वो पानी में गिरा और वो मछली ने खा लिया वो मछली got liberated. They went to Vaikuntha. मछली का went to Vaikuntha. So the disciples were asking question like that. कि तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि मछली पता नहीं वो डेवोटी थी क्या उसका मेंटल कंडीशन क्या था. तो कि हम लोग इतने दिन से आपको खा रहे हैं हमें तो कुछ लिबरेशन नहीं मिला हम तो वैकुंठ नहीं गए मछली कैसे वैकुंठ चली गई. तो वहां पे वो आ रहा है कि वहां पे ये दिखाने के लिए हो रहा है कि वो पोटेंसी क्या है महाप्रसाद की मतलब वैष्णव महान भक्तों की उसका शिष्ट खाने की उसका पोटेंसी क्या है तो वो देखा वो शोकेस हो रहा है वहाँ पे कि मछली जो है
बट इफ somebody is not getting, इसका मतलब ये नहीं है कि somebody is not getting liberated, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ प्रसाद जो भी मतलब डेवोटी में उसमें प्रॉब्लम है, मतलब जो चेस्ट है उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम विद था मेंटल कंडीशन। यदृच्छया च देवस्य भगवान् स तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवौ शिवनौ समाबुध्यता। Yadrichya, by chance, while wandering all over the universe, Cha, and they were she, the supreme saintly person among the demigods, Bhagavan, the most powerful, Tatra, where the two sons of Kuvera were enjoying life. Kaurava, O Maharaj Parikshit, Apashya, when he saw Narada, saint, Devau, the two boys of the demigods, Shivano, with eyes maddened by intoxication, Samabudhyata, he could understand their position. लाइक अभी हम मेंटल पोजीशन की बात ही कर रहे थे, मेंटल कंडीशन की। यहाँ भी हम जो ये सब पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल, इट लुक्स लाइक नॉर्मल सेंस ग्रेटिफिकेशन जो भी चल रहा है इन दिस जस्ट ये जो, तो इसको हो सकता है कोई नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोग हैं उसको इसी तरह से पढ़ेंगे और दे एंजॉय। इवन भागवतम, दे कैन फाइंड थिंग्स एंड विच दे कैन, क्या बोलते हैं, जो उनको उनके सेंस एंजॉयमेंट के लिए, तो उस तरह से देखेंगे तो ऑब्वियसली दे नॉट गेट दैट बेनिफिट, that will be offensive. So yeah, it depends on how we take it. So everything spiritual and material depends on one's mind. Yeah, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी समझ में आ सकता है। Oh Maharaj Parikshit, by some auspicious opportunity for the two boys, the great saint Devarshi Narad once appeared there by chance. By some auspicious opportunity for the two boys, the great saint Narad, Devarshi Narad once appeared there by chance. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे find some auspicious opportunity for the two boys. So getting chance to associate with them, even you getting chance to see them, that is a very, I mean, that's very auspicious opportunity. So even though one knows or not doesn't know, but that's very auspicious. So seeing them intoxicated with rolling eyes, he could understand their situation. तो नारद मुनि समझ गए कि इनकी क्या हाल है, इनकी क्या कंडीशन है, ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इट इज सेड, हाँ ये एक्चुअली आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट दिस, साधु संग सर्व शास्त्रिक होय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो दिस इज क्लियर कि साधु संग सर्व शास्त्र बोल, सारे शास्त्र बोल रहे हैं। लव मात्र मीन्स लिटिल, बहुत ही, लव मीन्स यूनिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा, एक क्षण, एक क्षण भी, क्षण से भी छोटा होता है, उतना भी साधु संग मिल जाए तो सर्व सिद्धि मिलती है, मतलब आपका मेरा भला हो जाता है। So whenever Narad Muni goes, any movement which he appears is understood to be extremely auspicious. It is also said, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। So this is the, क्या बोलते हैं, you can say, ये ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान, इट्स वेरी, कोई एक भाग्यवान जीव होता है पूरे ब्रह्मांड में, थ्रू आउट और वैंडरिंग ऑफ सो मेनी यूनिवर्सेस, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, हम एक योनि से दूसरे योनि में ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं। उसके अलावा भी देर सो मेनी यूनिवर्सेस, तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स का जो जर्नी चल रहा है उसमें से बहुत सारे जीवात्मा हैं, उनमें से कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसको
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता. So this bhakti lata bead जो है, which one receives through the mercy of Guru and Krishna, it's very, 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 very rare and very fortunate. So this is not something like my for example, there are those snails or somebody who is at very low platform, very low level, low consciousness. They cannot appreciate this. What is this Bhakti Lata beach? And this is like so precious. So according to their karma, all living entities are wandering throughout the universes, throughout the entire universe. Some of them are being elevated to the upper planetary system, some are going down into the lower planetary system. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है कि ultimately you need mercy of Guru and Krishna. It's not that one can get it by himself and one can progress by himself and there is no need of Guru like some there are some trans spiritualists so called या फिर जो भी philosophers they would write like एक प्रभुपाद के टाइम में एक उसने किसी ने एक बुक लिखा था there is no need of Guru and Prabhupada would say he's writing there is no need of Guru and he himself is trying to become a Guru by saying like that. That is, he's a rascal. That's rascal. See, it's contradictory, right? Why you're trying to take a position of a Guru and you're saying that there's no need of becoming Guru. Actually, by saying that you're trying to instruct people that अरे नहीं गुरु की जरूरत नहीं है गुरु की जरूरत नहीं है and you are somewhere or indirectly you are making them listen to you. You are taking that position, authoritative position. So yeah, by the mercy of one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. So one should first pray to Krishna, Krishna, and then Krishna. When Krishna will be pleased, Krishna will see कि हाँ ये sincere है, and Krishna will arrange guru for you. So बोलते हैं ऐसा कि कृष्णा की मर्जी से गुरु मिलते हैं, and then गुरु की मर्जी से फिर कृष्ण मिलते हैं. So by the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. PC Madhya 19:151. Narada appeared in the garden to give the two sons of Kuvera the seed of devotional service, even though they were intoxicated. This is the heart of the Vaishnava. He can see उनका क्या condition, but still he is trying to give them seed of devotional service. Saintly persons know how to bestow mercy upon the fallen soul. That part is known to them. So this is also a test of how saintly they are by seeing that how much of change of heart they can bring into others, how much they can like we see नारद मुनि obviously कॉमनली लोग अभी जैसे नारद मुनि को ही दे ले तो कॉमनली लोग नारद मुनि को लगता है जैसे लोग इस तरह से ट्रीट करते इस तरह से बातें करते हैं उनके बारे में जैसे लगता है कि इज लाइक उनको कोई काम धंधा नहीं है और लोगों को उंगली करते हैं और लड़ाई करवाते हैं इस तरह से लोगों का परसेप्शन रहता है बट सिंस दे डोंट नो व्हाट इज who is Narada Muni. Narada Muni is a very exalted devotee and he is spiritual master of many great devotees. Like we see in the case of
Srila Prabhupada, we can understand how great a devotee he is there by seeing that the effect of his इस तरह से उन्हें कितने सारे devotees, कितने सारे लोगों का लाइफ by people who were जिन्होंने तो कुछ भी नहीं पता था उनको when they accepted this Krishna consciousness. Okay. Hare Any Krishna, Prabhuji, yes, Dhanvat Prabhu. Pranams. Prabhuji, this point of Sarva Siddhi Hoye, that 1/11th or second, uh, What? Sorry, Prabhu. 111 sadhus, second. that's, yeah, that's Sarva Siddhi Okay, Hoye okay, for okay, that sadhu sangha. With the sadhu sangha, okay, Lava okay. Matra. Yeah, so I think Lava Matra is 1/11th of a second. Um, Okay. so now, One Prabhuji, eleventh of a this second. 1/11th, I think it's called 1/11th of a second. Yeah, yeah. I did not know the Yeah. exact, but yeah, it was very, very less. Yeah. Very less, yeah. Yeah. So now in this verse, when one comes in connection with Guru Sadhus, they get this immediately in 1/11th of a second. So this literally 1/11th of a second and the Sarva Siddhi Hoy, what is that Siddhi is talking about and what, uh, because uh, Siddhi could be more elaborately No, given to be understood. it is not talking about Siddhi in the terms of material sense. It is talking about in devotional sense. Sarva Siddhi Hall. Obviously, it's not talking that you become Siddhi means as in that you get so much of Siddhi. Like we know all that Ashprakar Siddhi, Anima, Lagima, whatnot. You can become smaller than the smallest, greater than the greatest, and so many in the so this Siddhi is the highest Siddhi that getting the devotion that is वो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे प्रभुपाद ने ट्रांसलेट इसको नहीं किया है फिर बट यहाँ पे जस्ट लिखा है एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस no actually it's not maybe we can see what is translated there and CC not there you want me to Ah, yes, Prabhu, we can just कितना था वो 2254, I think it was. 2250 मत देना 22 ये चैप्टर का नाम ही है प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बाय दैट आल्सो यू कैन 54 the verdict of all revealed scriptures that even a moment's association with a pure devotee one can attain all success. So yeah, all success means यहाँ पे तो yeah, we can Prabhupada ने elaborate नहीं किया है. But yeah, we can assume no, we can be क्योंकि ये devotional service की बात भी हो रही है. तो हाँ देखो यहाँ पे आ भी रहा है. The value of a moment's association with a devotee of the Lord cannot be compared even to the attainment of the heavenly planets or liberation from matter. And what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity, which is for those who are meant for death. तो यहाँ पे मुक्ति भी बोल रहे हैं कि जो the value of a moment's association with a devotee of the Lord उसका comparison मुक्ति से भी नहीं किया जा सकता. What to speak of worldly benediction in the form of so many kind of prosperity, material prosperity. So this is making clear, isn't it? Yeah, this is clear. Yeah. So now another question can also has come that if even a moment's association, one can achieve all success. So literally, what does this mean about achieving devotional service? You get devotional service, or you get the start process, or what is this like? You start with devotional service, is that?
and understanding of this. Yeah, you get bhakti basically. It depends कि कौन से लेवल पे है उसके हिसाब से मे बी फॉर अस अभी मान लो हमको भी मान लो कोई भी गवर्नमेंट एसोसिएशन मिल जाए कोई जेन्युइन साधु जो भी है तो फॉर मे वी मे सी लाइक कि अरे जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर आल्सो टेकिंग Prabhupada association maybe not directly but yeah directly we are taking his association so this is also like it's highest success you can get because gradually over the period of time you will get eventually because it may look like यार अभी तो कुछ हो नहीं रहा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम लग रहा है but actually all these are like um, बहुत कम है actually if we see the time scale तो उसके साथ में actually बहुत ही कम time so it's you are almost there actually you can understand just a matter of time if you just stick to it this process लाइक यहाँ पे जैसे नारद मुनि के सब यहाँ पे जैसे प्रभुपाद ने ये कोट किया है वर्स तो यहाँ पे इनको तो श्राप दिया इनको और ये बहुत सालों तक ये क्या बोलते हैं ये पेड़ बने रहे तो तुरंत से तो इनको नहीं मिला बट या इवेंचुअली दे गॉट टू सी कृष्णा फेस टू फेस तो यू मे कैन क्या यू मे क्या बोलते हैं आप बोल सकते हैं ऐसा कि अरे यहाँ तो बहुत टाइम लगा यार कहाँ लव मार्क सक्सेस मिला कहाँ या फिर वी कैन से कि हमारे साथ भी हम बोल सकते हैं कि वी आर ऑल्सो टेकिंग वन वे अदर वी आर टेकिंग एसोसिएशन ऑफ श्रील प्रभुपाद who is obviously a great devotee but हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा but yeah if the process is working we are at least doing something and gradually eventually you can get there you can get all success. So there is Yeah. some onus on us also that we have to do our part. But yeah, we have the mercy. It's just that how we can utilize that. Like वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि कोई कुएं में है कुएं में कोई गिर गया है उसको निकालना है बाहर somebody who is outside तो वो बाहर से रस्सी देगा but then you have to hold on that rope तभी वो बाहर निकाल सकता है So similarly Guru can give you rope but you have to hold on to it. Yeah. So even like one may have a guru, but if one's mental condition and one actually is lifted you, but one may not may one may want to like get out of the hand also. That's a possibility also while Yeah, one has a guru. So yeah. And generally, the mental yeah. condition, if one is, not serious, this does come. Like I also think many times that mental condition, we're like, oh, little later, we'll put it aside. I have many other things to do. So it comes, it's there in the back of the mind, but this mercy, like I was just thinking on that 11th of a second or that moment association is there, but how, as you mentioned, that endeavor and that not keeping the umbrella and allowing the Hmm. mercy to flow. Yeah. Thank you, bro. और इवन हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में अगर मान लो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो गया अभी भी चलेगा बट लेटर they again take to it. Why? Because they have got that association of a devotee, of a pure devotee. कई सारे devotee maybe they can get sidetracked something whatever you say, but then at later point of time they again take to that devotee. So eventually it works in the person. और या जो भी उन्होंने सेवा की है वो तो लॉस्ट नहीं होने वाला maybe you get sidetracked and you lost but again वो बाद में वो फिर से आपको चांस मिल सकता so yeah this importance of love मात्र साधु संग सरस्वती है we can understand is very precious okay so move ahead
Tam drishtva vidita devyo vivashrita shap shankita vashamsi paryadhu shighram vivastro neva guhyakau tam Narad Muni drishtva seeing Vridatah being ashamed Devya the young girls of demigod Vivashtraha although they were naked Shapasankita being afraid of being cursed Vashamsi garments Paryadhu covered the body Shighram very swift Vivastra who were also naked no not Eva indeed Uhyakau the two sons of Kuvera. Upon seeing Narada, the naked young girls of demigods were very much ashamed, afraid of being cursed. They covered their bodies with their garments. But the two sons of Kuvera did not do so. Instead, not caring about Narada, they remained naked. तो यहाँ पे जो यंग गर्ल्स थी they had that sense वो कि हाँ नारद मुनि का क्या पोजीशन है and seeing a sadhu you automatically see the effect of seeing a sadhu you also try to maintain that क्या बोलते हैं से डिमेनर कि जो भी अगर कुछ कर जनरली आप देखो कुछ लोगों को होता है कुछ ऐसा सेंस होता है that they might be doing so much of nonsense but when they see a sadhu they become little conscious कि नहीं ये सामने साधु उसके सामने थोड़ी इज्जत रखनी रिस्पेक्ट करनी दे बिकम मतलब उनको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है उनके सामने वो सब चीजें या फिर they'll also you'll see so many people will start talking about कि हाँ हम भी करते हैं भक्ति हम भी भगवान का नाम लेते हैं हम भी पूजा करते हैं like that they'll start saying a sadhu so here the same thing is happening यहाँ पे जैसे ही उन्होंने देखा they became ashamed and they immediately cover their bodies but यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतने ज्यादा मतलब इंटॉक्सिकेटेड है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में they don't even care कि कोई साधु है या कौन देख रहा है they don't bother at all तो यहाँ पे उनकी कंडीशन ऐसी थी कुबेर के जो बेटे थे दे आर नॉट केयरिंग अबाउट नारायण दे रिमेन नेक ठीक है साधु है अपनी जगह पे मुझे लाइक दैट तो इनफैक्ट वो ही नॉट इवन बॉदर है वो इतना इग्नोरेंट है कि वो ध्यान में नहीं दे रहा है कि साधु है या नहीं है कोई ही इज नॉट इवन अवेयर कि साधु बिकॉज इतना इंटॉक्सिकेट समटाइम्स पीपल डोंट इवन नो व्हाट साधु इज लाइक आजकल का टाइम वैसा ही है कलयुग भी देखो तो people do not even discriminate between साधु and who's not साधु जो भी एक्चुअली सबको एक बकेट में कैटेगराइज कर देते हैं एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं सब जो सब कोई ढोंगी है सब कोई फॉल्स है दे डोंट इवन बॉदर टू एंडेवर टू नो कि हाँ भाई कोई जेन्युइन है भी या नहीं है वैसा है अभी तो ये इज वेरी मच एप्ट हियर आज के टाइम लाइक अभी कुछ दिन पहले शायद आप ही बता रहे थे ना कुछ डिवोटीज बार या पब में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे तो कुछ लोग जो है वो दे बिकेम एंग्री एंड ये वो दे डिड नॉट बॉदर बट कुछ आप किसी के बारे में बोल रहे थे कि दे वर लिटिल रिसेप्टिव एंड दे वर सेइंग नो दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस गिविंग दिस भगवद गीता एंड दे हैड दैट सेंस कि अरे हाँ कोई साधु सेंटली पर्सन बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो भी वो सेइंग दैट कुछ दिन पहले वो आप बता रहे थे But here the question तो arises that if two sons of the Kuvera were such great associates and devotees, सॉरी प्रभु they associates, Hare Krishna. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा Yeah, 1 second. 1 second. Is it okay now or still? है या इट्स ओके Hare Krishna. यस प्रभु Yeah. So in this, the two sons of Kuvera, they were great associates of Shiva.
But here they were not remembering who's Narad. They, of course, knew who Narad would be. But the girls, they were, I don't know if they were associated with Shiva or not, or they were just there to enjoy him, they were ignorant. But they, somehow or the other, uh, immediately understood that. So just the thought that how, being even associates and worshipping the demigod, and then they knew who Narad would be, but still आपका they were so वॉइस much आपका वॉइस आपका intoxicated. वॉइस वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है. Uh, Hare Krishna. Yes, प्रभु. Uh, yeah, is it better? Yeah, this Audible? time you are audible. Yeah, जब फ्लो में बोलने Not लगते हो तो okay. बहुत सारे वर्ड्स Okay, then I'll wait. मिस. I'll try and correct myself later. I'll ask you the late question later. Maybe I need to ओके correct ओके the audio. ओके ओके. ठीक है, आगे देखते हैं. तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदानधौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्तं जगौ. Tau, the two boys of demigods, Drishtva, seeing Madira Mattau, very intoxicated because of drinking liquor. Srimad Srimad Andhau, being blind with false prestige and opulence. Sura Atmajau, the two sons of the demigods. Ayo, unto them. Anugraha Arthaya, for the purpose of giving special mercy. Shapam, curse. Dasyan, desiring to offer them. Idam, this, Jagau uttered. Seeing the two sons of the demigods naked and intoxicated by opulence and false prestige, they were Narad in order to show them special mercy, desired to give them a special curse. Thus he spoke as follows. The special mercy थी तो special curse भी. तो see, we can see कि कितना कि devotees compassionate होते हैं, दयावान होते हैं obviously. बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल है. वो मर्सी देना भी किस तरह से देना है, किसको किस तरह से मर्सी देना है, दैट ऑल्सो दे नो वेरी वेल. उनको कर्ज किया, बट उनको यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे आ रहा है कि उनको मर्सी देनी थी और यो स्पेशल कर्ज दे रहे हैं. तो दे नो कि किस तरह से क्या किसको किस तरह से ट्रीट करेंगे. सो समटाइम्स यू मे सी, कभी कभी हो सकता है कोई सेंटी पर्सन है वो, they are getting angry and they are chastising, like you see Srila Prabhupada also becoming angry on some disciples. So that does not mean that mercy is not there. We should understand this. That if that he's taking the pain to, if he's actually he's shouting or he's getting angry on you, and that's actually we should understand as mercy. Actually, their mercy that they are bothered to get angry and correct us. Otherwise, if they are not merciful to us, they would not even bother to correct us. So that is their special mercy. If somebody is giving us chastisement, some senior devotee, some, I mean, real good, nice devotee, if they are giving us chastisement. So यहाँ पे special curse मिल रहा है उनको. They are not like fools कि चलो special mercy देना है तो अभी उनको जाके बिठा रहे. अब जैसे जनरली आप देखोगे लोगों को दया करना होता है. देयर इज टेंडेंसी बट दे डोंट नो हाउ टू डू बेनिफिट टू देम. उसके लिए वो पैसे दे देंगे और वो बातें करेंगे कि अरे हम हॉस्पिटल खोल लेते हैं, भूखों को खिलाते हैं, एक लोगों को खिलाते हैं. एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू से वो अन्नदान की बात रहेगी तो अन्नदान के लिए लोग पैसा निकाल लेंगे. लेकिन व्हेन यू से कि भगवत गीता दान कर दो तो सोचेंगे, फिर उनका दिमाग चले जाएंगे भगवत गीता पढ़ के क्या हो. थोड़ा कुछ पैसे दे देंगे, खाने पीने मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएगा, तुमको कुछ भला हो जाएगा. लेकिन भगवत गीता से क्या. दैट बिकॉज दे डोंट नो, इवन दे डोंट इवन नो कि किस तरह से किसी का भला कर सकते हैं. So anyway, so thus he spoke as follows. Although in the beginning Narada Muni appeared very angry and cursed them,
So you see, he appeared very angry and cursed them. At the end, the two demigods, Nalakuvara and Manigriva, were able to see the Supreme Personality of God, Krishna, face to face. Thus, the curse was ultimately auspicious and brilliant. One has to judge what kind of curse Narada placed upon them. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives here in a good example. When a father finds his child deeply asleep, but the child has to take some medicine to cure some disease, the father pinches the child so that the child will get up and take the medicine. In a similar way, Narada Muni cursed Nalkuvar and Manigri in order to cure their disease of material blindness. So if somebody is actually pinching us genuinely, sincerely, with the aim of benefiting us, we should not take that as uh, वो गुस्सा हो रहे हैं and we are retaliating then. Rather, we should understand कि उनकी mercy. Those devotees are very, you will not, I mean, you should be thankful to those devotees who are actually taking the trouble, doing the thankless job of reminding you. So that's why sadhu का मतलब ही होता है एक सही है तो sadhu is like cut through his words. Sadhu ऐसा नहीं है कि he is always nice to people and smiling. Sadhu is someone who wants who cuts through words and who जो आपके जो भी रॉन्ग कॉन्सेप्शन है इल्यूजन्स है उसको कट करे तो दैट्स व्हेन यू विल सी शास्त्रों में भी इस तरह के बात लिखे हुए हैं जैसे कृष्ण भी देखो तो इस तरह से वो हार्श लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने देखा भी जस्ट थोड़ी देर पहले तमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम ऑल दीज आर हार्श वर्ड्स नराधम है दुष्कृति न है दे आर फूल्स प्रभुपाद वुड से कि अगर तुमको केस करना ही है तो प्रभुपाद बिकॉज प्रभुपाद will always say he's a rascal we would use this word प्रभुपाद would say कि अगर तुमको केस करना ही है तो कृष्णा के अगेंस्ट केस करो he is saying rascal he is saying प्रपद नराधम मूढ़ा you go to him that's the business of prasad it's not that कि हम बस बैठे हैं कथा सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है बट देन कोई भी उसमें चेंज आ ही नहीं रहा हमारे दिनचर्या में हमारे एक्टिविटीज में हमारे हार्ट में हमारे कॉन्शियसनेस में देन उसका क्या यूज है तो एक्चुअली like sadhu is like a surgeon who cuts through his words like a doctor who do surgery through a knife. Okay, so I'll end here. Any question, comments? Hare Krishna, Prabhu. Yes. Yeah. So the question was for these two sons were more merciful, is it, than the girls there? Because they got a special um, boon to be cursed by Narad Muni, and the girls, though they were in knowledge that there's a great sage here, and they immediately um, covered themselves, knowing that how to respect a sadhu. तो आप बोल रहे हैं कि उनको जो ज्यादा इग्नोरेंट थे उनको मर्सी मिल गई गर्ल्स को मर्सी नहीं मिली इज इट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से I'm just asking a question. I do not know. From here, it looks that way from the thing that they got special mercy, special curse, and there's nothing mentioned about the girls at this moment. They were respecting the sadhu, but that's it. And then we don't know what happened after that. हाँ आई डोंट नो बात तो सही कर रहे हो आप यार यार उसको मिला उसको मतलब वो तो ज्यादा उनकी स्थिति खराब थी फिर भी उनको मिल गई स्पेशल मर्सी गर्ल्स के साथ क्या हुआ हाँ आई डोंट नो क्या हुआ उनके साथ वी डोंट नो कि किस तरह से वैष्णव एक्ट करते हैं वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वैष्णवेरा
Yeah. And another also एक question I एक have regarding the एक same point. Yeah. After एक this, yeah, एक please एक answer, then I'll ask. या एक वर्स है सीसी मध्य 23:39. I'll show you. CC मध्य 23:39. यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली. Okay, I'll read the translation. वैष्णव या क्रिया मुद्रा विघ्नेह न बुझया. बुझया मीन्स बुझ समझ में नहीं आता है. Even the most learned man cannot understand the words, activities, and symptoms of a person situated in love of God. So you don't know how they act. Actually, frankly speaking, I can speculate anything, but I don't have answer for this. What happened to girls and why did he was he why did he favor only the uh, Nalakuvara and Manigriva and why not girls? I don't have uh, exact answer for that. But I think your But answer is pretty enlivening that the Vaishnava is independent to do yeah, what they want because they are pure lovers of God. And yeah. maybe they, at that moment, what they chose was the choice of a और Vaishnava. एक चीज ये भी रहता है ना. Sometimes somebody is in knowledge. तो हो सकता है they are already in knowledge and they are little more reluctant to receive your mercy. But somebody who is क्या बोलते हैं although they are ignorant है but वो दे लाइक बच्चे देख लो. छोटे बच्चे जैसे देख लो, उनको कुछ पता नहीं होता है तो उनको सिखाया जा सकता है. I'm just speculating. I'm just giving one example here. ये छोटे बच्चे जैसे हैं उनको कुछ पता नहीं है तो यू कैन क्या बोलते हैं उनको मर्सी दे सकते हो उनको कुछ बता सकते हो. बट somebody जो कि जैसे कोई मायावादी है they are already so much they are roaming around with so puffed up and they think that they are so they have so much of knowledge. तो उनको आप डिफिकल्ट है कि उनको आप कुछ कर पाओ उनके हाथ तो इसलिए डिफिकल्ट. तो वैष्णव एक्चुअली देसी की जनरली कि इसको कौन कैंडिडेट है जो रिसीव कर सकता है. बट यहाँ नारद मुनि के केस में तो वी कैन से कि इट्स डिफरेंट थिंग बिकॉज ही इज वेरी मच पावरफुल वेरी मच केपेबल ऑफ चेंज द हार्ट ऑफ एनीवन. So I Yeah, don't know. Prabhu. Yeah. No, it's enlivening to understand. One concept is very clear that Vaishnava um, actually, yeah, they're what they want, they do. The Kriya Mudras that verse was is very actually difficult. Sometimes it can get bewildered for a जैसे प्रभुपाद की एक्टिविटीज आप देखो उनकी स्टोरी पढ़ोगे उनके अलग अलग ही समटाइम्स यू विल बी bewildered कि प्रभुपाद या फिर प्रभुपाद गुस्सा क्यों हो रहे हैं प्रभुपाद ये क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद ऐसा क्यों किया. मतलब समटाइम्स इट मे बी bewildering टू यू. तो इसलिए वी शुड नॉट बी वेरी बहुत तुरंत से जजमेंटल नहीं होना चाहिए वैष्णव को लेके कि अरे ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं. देयर माइट बी सम रीजन दे नो yeah, व्हाट दे आर डूइंग. yeah, that's a good लाइक point. That defect. या I I लाइक हो I सकता है I जैसे जैसे understand. जैसे प्रभुपाद कोई कोई चैलेंज करता है तो कभी वो प्रभुपाद गुस्सा के उसको लाइक वो अपने आप को गॉड गॉड बोल रहा है तो बोल प्रभुपाद बोल रहे यू आर नॉट गॉड यू आर डॉग. या फिर कभी कभी वो मान लो बोल रहे कि ओके ठीक है भाई हम बेवकूफ हैं वी डोंट नो मच लाइक दैट ही कैन इन अ डिफरेंट वे. वी डोंट नो. Sometimes he can be Yeah, hard as a thunderbolt. Sometimes he
taking different steps. बट Yeah, इसका and a मतलब good ये नहीं point. कि उनको Yeah. इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको भी अपनी तरह उनको कैटेगराइज कर ले कि हाँ ठीक है हमारा जैसे मूड करता है हम वैसे बिहेव करते हैं। प्रभुपाद का भी हाँ वैसे नॉर्मल पर्सनैलिटी है जैसा मूड किया कर। नो वी शुड नॉट इवन डू दैट दे मस्ट दे नो कि किस तरह से दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो वो उनका कॉन्शियसनेस जो अलग लेवल वो दे नो कि किस तरह से एक्ट करना है। या वी कैन नॉट बेसिकली जज फ्रॉम आवर ओन जहाँ से देख। ओके यस प्रभु सॉरी। Yeah, Prabhu. Yeah, this judgmental tendency which is there, you know. Yeah, I tend to like, just generally that judge. I mean, we know that we're not supposed to judge, but it still sometimes just comes out, pops out. Yeah, ऐसा क्यों किया? Why like that? Why this devotee behaved like this? Why they were talking like that? That judgmental tendency is the defect, which I feel I should also be more introspective. Yes, Prabhu. Thank you for this. वो आ ही जाता है बाय डिफॉल्ट हमारी टेंडेंसी है वैसे। बट देन अगेन वी शुड बी नॉट क्या बोलते हैं वी शुड ट्राई टू इंक्वायर। हाँ ठीक है डाउट है तो ठीक है हम उसको किसी के साथ डिस्कस कर क्लियर कर सकते हैं। बट या वी शुड नॉट कि नहीं हम मान में दिल में ये मान के नहीं बैठ सकते कि नहीं अरे ये तो गलत किया उन्होंने। वो नहीं होना चाहिए। Yeah, yeah, Prabhu. Actually, I've also experienced the same. वॉट Yeah, जजमेंटल। no, no, judgmental नहीं, but I feel very like, uh, हाँ, judgmental भी बोल सकते हैं, पर उतना भी नहीं, because what happened कि in temple itself, like there was a one pujari who shouts everyone, whosoever gives him the flower and that thing to uh, give to the Krishna ना, so he shout ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है. So I yes, I thought that कि मतलब he is very angry and he is doing this much of worship and involving all his self to the Krishna consciousness, but still he showed anger in him. हाँ जब तक हम पता नहीं है हमको तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो इसलिए हमें नहीं पता है व्हाट हिज मूड इज। वो गुस्सा कर रहा है तुमको लगा अरे यार ये इतने दिन से भक्ति में है और इसको अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं है क्या बैठ के हमको सिखाएगा। लाइक दैट वी कैन थिंक। ओके ठीक है सो विल एंड हियर। Prabhu, one वी point कैन came that यस। about the Naradamas, fools and rascals. So, this point here in this verse about, I think towards the end it was mentioned about uh, that how Srila Prabhupada's, can you just put the, और is इट्स there a इट्स verse? वन वन जस्ट वन थिंग इट्स अदर वे राउंड आल्सो दैट कोई अगर डिवोशन में है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा पोलाइट है बहुत अच्छे से की सारी बिहेवियर अच्छी लग रही है दिख रही है आपको में भी एक्सटर्नली तो इट डजंट मीन कि वो बहुत ही एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है। वो ही इज ट्राइंग टू जस्ट क्या बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस इज जस्ट ट्राइंग टू बी मोर कंसर्न अबाउट हिमसेल्फ बीइंग लुक्ड एज वेरी नाइस devotee। तो अदर वे राउंड भी हो सकता है दैट इज आल्सो वन थिंग। Yeah. So this point about habituated, like habit, one has a habit. Somebody is correcting, somebody is giving us the proper knowledge and telling what to do, what not to do. So if a person like is not able to take that correction or chastisement or just doesn't want to take to the higher consciousness or better develop consciousness, it's a habit. Like maybe there's a habit that it's just that I just don't want to take it. Okay, you tell me again and again and again, and I have this habit. I'm not gonna listen to you. I'm not gonna listen. So then, is that person like, for example, if I don't take it, will that be like again in the category of fools and rascals? जो नहीं ले रहा है वो Yeah, the understanding of हाँ this developed हाँ consciousness. हाँ तो फूल ही है वो उसको सामने वाला
उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बात समझ में नहीं आ रही, तो फूल ही है और क्या। कृष्णा कॉन्शियसनेस भी हमको अपने अपने हिसाब से चाहिए। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कितना डोजेज लेना है, मुझे कितनी चेस्टाइजमेंट लेनी है। दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम, कंडीशनड थिंकिंग। अभी डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कितनी आपको कितनी बीमारी है, आपको कितनी डोजेज लेने हैं, कितना कैंसर हो गया तो इसलिए कैंसर निकालना है ना। लेकिन आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, रहने दो, तकलीफ है। तो या वी शुड ऑल्सो डेवलप दैट, कि हमको ओपन होना चाहिए। एंड समटाइम्स मे बी कोई जूनियर हो सकता है, हमको कुछ बोल के चला जाए, कोई बच्चा भी होके आके बोल के चला जा सकता है। दैट इज ऑल्सो समटाइम्स इंस्ट्रक्टिव, मतलब हमारे लिए लर्निंग हो जाता है हमारे लिए, कि इज्जत कृष्ण अरेंजमेंट की वो, कि वो मेरे लर्निंग के लिए शायद बोल के चला गया। मेरे में जो क्वालिटीज थी बैड, जो भी बुराइयां थी, वो दूसरा हो सकता है बोलने में शर्म कर रहा हूँ, लेकिन कोई दूसरा छोटा बोल के चला गया, ऐसा भी हो जाता है। तो या वी शुड बी ओपन एंड रिसेप्टिव आंसर्स। बट You देन mean अगेन द the small फोकस, boy, देन अगेन small हमारा boy? ये नहीं है कि हमको हमारा फोकस ये नहीं है कि हमको अपने आप को परफेक्ट करना है, बट वी शुड बी रादर फोकस टुवर्ड सर्विंग कृष्णा। बट हाँ हाँ, अगर कोई हमारी गलती को पॉइंट आउट कर रहा है तो वी शुड ट्राई टू, हमको करेक्ट करना चाहिए उसको। देन वी शुड नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। Mm. Yeah, this example you gave about a small boy or somebody who's junior who's correcting. It could be a small boy is not be probably correcting you about Krishna consciousness for the knowledge, but maybe he's correcting you with the like for example, somebody comes and says that don't worry, God is listening to you, you know, and when one is like having this ego, a small boy comes up to you and says that you know, we are depressed and down, and then somebody comes in and says, don't worry, God is listening to you, you know. So is Mm. that also like a message that from the small boy who doesn't even know Krishna consciousness and is not aware, but he's just saying that, you know, like say Mm. somebody's really low and down. Mm. Yeah, it can. uh, Krishna is maybe making you learn to that small scale. So yeah, हाँ एक वो चीज़ भी very important है कि we should not be very much conscious only about ourselves making perfect, but yeah, we should be more concerned to do service, what is pleasing to Krishna. अदरवाइज फिर हम बहुत ज्यादा इस चीज को कॉन्शियस लेके रहेंगे कि अरे इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, हो सकता है मुझे मेरे लिए सही है, बट देन अगेन मतलब अब हमारे तरफ फोकस है कि मुझे अपने आप को परफेक्ट करना, वो भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। Gradually, when you do actually Krishna, you chant sincerely, you will get, Krishna gives intelligence. Krishna is what saying, Tesham yatata, Tesham bhajata, sorry, what is that? Tesham is the, uh, what is, bhajata priti purvakam, dadami buddhi yogam tam, yena mam pyanti pre. So Krishna will give you the intelligence. That faith we should have. We just have to sincerely surrender to Krishna, chant our rounds. Okay, so we'll do. Oh, okay. So we'll do